So today we are going to do lecture number 4 revision for the chapter that I have started yesterday a little bit, that is electrostatics. So we have completed current electricity, EMI, AC circuits, correct? So we will move towards electrostatics today. Probably we will complete it today. And then we will go to the other topics for discussion. So the others are smaller chapters, so we can do 2 to 3 chapters in tomorrow's lecture. So I think we have a lecture tomorrow. I will try to finish MEC and magnetism together. And then we have electrons and photons. And then please tell me which other topic I should do. I can do that topic also. So till now we have done 3 chapters. Today is the 4th chapter. And probably I will finish with 3 more chapters. Let's see tomorrow. Okay. Okay. Yeah. So please let me know which topic numericals are left, which you need help. So we can complete that. Yeah, that is also possible, Taib. Yeah. Okay. Yes. Yes, Aryan. I'll complete that. Yeah. Okay. Priya Palak. Yes. Okay, I'm just taking. Okay. I've already sent Shivani to Prashant, sir. Please contact her. I've given it today, today morning, afternoon. Somebody reminded me. Somebody had messaged me on WhatsApp, so I've already sent it. Okay. Fine, guys. I'll do it. Yeah. So let's start off and let's finish off our part today. Acha, Bhavesh, it was you? Okay. So you can you just forward it to the group for the others also, Bhavesh? I think I send you, right? Please forward in the group after you had mentioned. So, yes, Priya, I do have the solution of all the chapters. So we'll see how it can be communicated. Okay. So now let's start off with this. The mean free path of electrons in a metal. The mean free path of electrons in a metal. So it's a path, so we can take it as the D as the data. So I'm writing the data here. Let's take it as D. How much is it? 4 into 10 to the power minus 8 meters. Right? Find the electric field in units of volt per meter. मतलब electric field E ढूंढना है, which can give on an average 2 EV of energy to an electron. So the energy given to us here is 2 EV. Right? अपने को electric field ये energy है. So I'll just put it as W or U so that you don't get confused. So you can put it as energy is 2 EV. अब एनर्जी क्या होता है, सबको पता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इज इक्वल टू 2 EV. Yes or no? So can I say the voltage out here is nothing but 2 volt? बोल सकते हैं? So the voltage out here हमें पता है कि 2 EV बोला, that means EV is nothing but QV. So हमारा voltage is 2 volt. Now it becomes very simple. We know the formula. What formula are we going to use? Electric field find out करने के लिए. What formula will we use? We will use the formula E is equal to which formula? Come on, guys. Yes, very good. Very good, Palak, Mrinali. V by D is our formula. Right? So what is electric field here? Electric field will become kitna voltage hai? 2 upon how much is the free path or the distance, that is 4 into 10 to the power minus 8. So ये गया, ये हो गया 0.5 into 10 to the power 8, and that means this is 5 into 10 to the power 7 volt per meter. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया. Is it clear, everybody? Please take it down, and this will be the final answer for this question.
Yes, I'll do that, Mrinali. I'll do that. Is it done? Completed? EV is nothing but electron volt is energy. Energy, Sahil. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, अभी आपसे फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? ईवी. सो एनर्जी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2 ईवी लिखा. इसका मतलब ये जो 2 है दैट इज बेसिकली द वोल्टेज. इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज तो आप चेंज नहीं कर सकते. चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज इज 1.6 into 10 raised to minus 19. Sahil, is that clear? सो एनर्जी इज इक्वल टू ईवी करके हम वोल्टेज निकाल सकते हैं. मतलब अगर मैंने आपको बोला 10 ईवी, इसका मतलब है द पार्टिकल वाज गिवन 10 वोल्ट. सो वो 10 स्टैंड्स फॉर द वोल्टेज बेसिकली. गॉट इट? ओके. कैन आई मूव फॉरवर्ड? Okay, so the next question is find the electric potential. Yes, yes, Jinisha, we're taking, yes, yes, beta. U stands for energy. आप U use कर सकते हैं, नहीं तो आप W use कर सकते हैं. आप कोई भी एक use कर सकते हैं, U या W use कर सकते हैं. Find the electric potential at the surface of an atomic nucleus where Z is equal to 50 and your R is equal to 9 into 10 to the power minus 13 centimeters, or it is 9 into 10 to the power minus 13 into 10 to the power minus 2 meters. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई k epsilon naught भी आप लिख सकते हैं, but here anyway it's on the surface, it's air is the medium. It is nothing but Z into Q upon R. So as they have given us the atomic nucleus, so this is Z into Q. अगर आपको E से दिक्कत है तो आप Q भी लिख सकते हैं. What is 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10 to the power 9. What is Z given to you as 50, right? Into what is Q given? Q you already know is 1.6 into 10 raised to minus 19 upon what is the distance that they have given is 9 into 10 to the power, ये हो जाएगा minus 15. कैलकुलेट कर पाएंगे आप? Please calculate and find the answer for this. Please tell me the answer for this. ये बहुत easy calculation है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैंसिल हो रहा है. पावर देखो ईशान, पावर भी चेक करो बेटा. -15 ऊपर जाएगा ना. 1.6 into 5 करना है बेटा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना. k तो 1 है बेटा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 raised to 9 था. ये पूरा हमने ये वैल्यू लिया है ना. 9 into 10 raised to 9 is a constant. Z हमारा 50 है. Charge is 1.6 and R is 9 into 10 to the power minus 15. Okay, क्या आप सबको मिल रहा है 8? Okay, I can see that Ishan has got, Pankaj has got, Praveen has got, Neeraj has got, Mrinali has got. Are you getting 8 into 10? Palak has got 10 to the power 6 volt. ये आपका required answer रहेगा.
So this is the formula for electric potential, 1/4 pi epsilon naught. And here they have changed the Z. Usually we take it as hydrogen, इसलिए Z1 होता है. No, or we consider Z to be 1 if not given, you know. So here the atomic nucleus was strictly given to us as 50, so we have to use 50. मिली नहीं आएगा आर्यन, मिली का सर, अच्छा मेगा you mean to say, okay. Mega you can write. Capital M लिखना पड़ेगा फिर. Small m is for milli. नो गौरव, पावर देखो ना बेटा. Completed, guys. Dhruvin has completed. Pankaj has completed. Is it over? At least I need 5 thumbs up to go to the next slide. Okay. Thank you. I'll go ahead with the next one. So this question we had done yesterday, right? This question we had done yesterday. This also we did yesterday. Yes, Priya, for now, it's better we go as per what they have given us. Let's get to the two spheres question. So they have given us two spheres, A and B respectively, at the same potential. So we don't know the sphere, so we're just imagining that one sphere will be like this, one sphere will be like this, or vice versa. And we are assuming that एक का, you know, radius A है, दूसरे का B है. Let's assume that it is having some charge Q1, some charge Q2. And it is giving us the condition that they are at the same potential. They are at the same potential. Find the ratio of the surface charge densities of A and B. So how do we start with this? उन्होंने जो data दिया है वही से शुरुआत करेंगे. Potential same बोला है, तो VA is equal to VB. ये हमारा A वाला sphere है और ये हमारा B वाला sphere है. What is VA? 1/4 pi epsilon naught Q1 upon what is radius A is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 upon B. So what will happen here? This 2 will get cancelled. We will get something like Q1 upon Q2 is equal to A upon B. So ये हमें दिखाई देगा, right? Q1 upon Q2 is equal to A upon B. Now they are asking us what is the ratio of the surface charge densities. Surface charge density मतलब क्या है? अपना sigma है. So in the second point, we need to use, yes, we need to use charge upon area, that is sigma. Sigma is, abhi sphere hai, so it is charge upon 4 pi r square. Agreed? So what will be sigma of A
upon sigma of B. It will be nothing but Q of 1 upon Q of 2. Yes or no? Of A into, can I say it will be R square? So I will just write directly, inverse है ना? So I will just write directly B square upon A square. चलेगा? अब Q1 upon Q2 क्या है? अपने को यहाँ पता है कि it is A upon B. So this is A upon B into B square upon A square. So what is your answer? Sigma A upon sigma B is equal to B upon A. So this is our final answer. Get it guys? तो पहले क्या करना है? कंडीशन को यूज करना है. पहले पोटेंशियल जो है इक्वल है, तो हमने V1 इज इक्वल टू V2 किया या VA इज इक्वल टू VB किया. हमने फॉर्मूला डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और फिर हमने यहाँ पर चार्ज पहले का कितना है A है और दूसरे का B है. उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरों दोनों में कैंसिल हुआ. फिर हमने Q1 और Q2 का रेशियो निकाला which is A upon B. अभी सेकेंड क्या पूछा है कि find the ratio of the surface charge densities of A and B. surface charge density दिया जाता है सिग्मा which is charge upon area. ये स्फीयर है, ये स्फीयर है तो एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर. तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. Q1 अपॉन Q2 इज नथिंग बट ए बाई बी. हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमें सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी क्या मिल रहा है? बी अपॉन ए मिल रहा है. इज इट क्लियर? एनी डाउट? B square by A square because it is R square ना, तो it is R2 square upon R1 square. This is as good as writing R2 square upon R1 square. जिसको डाउट है ये जो है ना, ये it is as good as writing Q1 upon Q2 into R2 square upon R1 square. बराबर है ना? इनवर्स है. क्लियर है? ओके ओके. We can try, Jinisha. We can try. Please tell me when it is completed. Yesterday's PDF I have already sent. I've told Bhavesh to put it in the group. Bhavesh, please put it in the group for the others. I've also sent to Prashant sir as well. So you can contact him.
Okay, let's move on to the next question. I want all of you to read the question step by step. Don't read the complete question. Read it step by step. So there are two parallel plate capacitors, X and Y, having the same area of the plates and same separation between them. Matlab, we are saying that A and D are same, right? So I'm just writing here. Of course, when you're writing in the examination, you have to write that let the area of the plates be A and the distance between the plates be D and they are equal for both the plates. So मैं यहाँ पे से short में लिख रही हूँ कि A same है और D भी same है. You must write statements wherever required. So let A be the area and D is also same for the capacitor. Are connected in series to a battery of 15 volt, right? They are connected in series to a battery of 15 volts. So we have two capacitors and they are connected to a battery of 15 volt. So let's say this X and Y hai. So I can take it as C1 and C2. ये दोनों अलग-अलग capacitor हैं. X has air between the plates while Y contains a dielectric of constant 2. तो पहले इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं. हमारा पहला फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये फॉर्मूला यूज होगा पहले, ये वाला फॉर्मूला. इससे हमें C1 और C2 मिलेगा. अब C1 क्या होने वाला है? पहले एरिया X हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, इसका मतलब K1 होगा. सो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D और हमारा C2 क्या होगा? K होगा 2. सो इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट? तो हमारे पास C1 है, हमारे पास C2 है. तो कैन वी से दैट C2 इज 2 टाइम्स ऑफ C1? क्या हम ये कंडीशन लगा सकते हैं? C2 is 2 times of C1, right? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये फर्स्ट पार्ट. while Y contains a dielectric of 2. Okay, so first part हमें एक relation मिला that C2 is equal to 2 times of C1. Now calculate the capacitance of each capacitor. Calculate the capacitance of each capacitor. If the equivalent capacitance of the combination is 2 microfarad, calculate the equivalent capacitance of each capacitor if the combination is 2 microfarad. का मतलब वो दोनों series में है, right? So what's the second formula that we are going to use? We are going to use the formula product upon sum. ये वाला formula हम use करेंगे, product upon sum, based on the second part of the question. So here we are going to write C equivalent हमें दिया गया है is 2 C1 C2 और C1 into C2 I am writing as 2 C1. चलेगा, right? C1 plus 2 C1. So this will become nothing but 2 C1 square upon 3 C1 is equal to 2. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? आर वी गेटिंग ये C1 कैंसिल हो जाएगा. 6 is equal to 2 C1. So C1 आपको मिल रहा है 3 माइक्रोफैरड, बराबर. अगर C1 आपका 3 माइक्रोफैरड है तो आपको C2 कितना मिलेगा? You will get it is double, that is 6 microfarad. So we have solved C1 and C2 and we have got the value of each capacitor. So that means we completed the first part of the question. यहाँ तक समझा है सबको? Please write it down, then I will tell you the next part.
please write it down and then we will do the next part. Bhavesh, there is a probability because of the current situation. So that is the reason I best think that because textbook questions you all have already done, right? So looking at the current situation, it is better that you cover with the bank as well. Can I move on to the second part of the question? So the second part of the question reads, calculate the potential difference between the plates of X and Y. Whenever I'm talking about potential difference, and as these capacitors are connected in series, it is essential to find which other factor. It is essential to find which other factor. Anybody? हमें अभी C1 और C2 पता चल गया है, हमें पता है कि वोल्टेज भी पता है कि 15 है. तो yes, very good. So the first Rishi and Chaitanya have answered correctly. Yes, Anish, Anand. The next factor that we have to find is nothing but charge. चार्ज हमारा निकालना है. सो चार्ज निकालने के लिए हम क्या निकालने वाले हैं? Q is equal to CV. So the next step that we have to essentially find out is Q is equal to C equivalent into V. How much is C equivalent? How much is our C equivalent? हमें दिया गया था 2 into हमारा पोटेंशियल कितना है 15, इसीलिए हमारा Q कितना है 30 माइक्रोकूलम. डू यू एग्री? माइक्रो को भूलना नहीं है because everything is in microfarad. So
वी हैव गॉट आवर चार्ज, टोटल चार्ज हमें पता चला है। इसका ये मतलब है कि देखो इस डायग्राम में क्या क्या पता है। अभी हमें C1 पता है, हमें C2 पता है, हमें अभी टोटल चार्ज पता है। हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप हियर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप हियर। वी कैन कॉल इट एज V1 एंड V2। इज इट ओके? सो व्हाट इज V1 गोइंग टू बी? V1 is the potential drop across the first capacitor, that is X or Y or whatever you want to call it as. So I'm writing here the potential drop across capacitor Cx, which can also be written as C1 or V1 is equal to Q upon C1. How much is the charge given to us? Charge is 60, charge नहीं 30 upon what is C1? C1 हमारा कितना था? 3. So therefore हमारा V1 कितना हो रहा है? क्या सबको मिल रहा है 10? क्योंकि वो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 वोल्ट आंसर मिलेगा, राइट? Similarly, what is the potential drop across capacitor CY या capacitor Y? Can I say V2 is equal to Q upon C2, which is 30 upon कितना था हमारा कैपेसिटर? 6. सो V2 is equal to 5 वोल्ट। ये आपका सेकेंड का आंसर होगा, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उनको और भी कुछ चाहिए। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, it says what is the potential ratio of the electrostatic energy in X and Y? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? So if you are going to talk about the electrostatic energy, अपना चार्ज कांस्टेंट है, so you can use anything. You can either use half QV or you can use half Q square by C. आपके ऊपर है कि आपको हाफ QV यूज करना है, आप वो यूज कर सकते हैं, या अगर आपको हाफ Q square by C यूज करना है, बट चार्ज वाला ले जिसमें कांस्टेंट है। सो सपोज आई एम यूजिंग W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू हाफ QV अगर हम यूज करते हैं, then this is equal to V1 upon V2, which is nothing but 10 upon 5. इसलिए हमारा जो W1 upon W2 होगा is equal to 2:1. हमने जो फॉर्मूला यहाँ यूज किया है वो W is equal to हाफ QV है। आप हाफ Q square by C भी यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए आप हाफ CV square यूज नहीं करेंगे। Is that clear? Yeah. So please take it down quickly.
I hope this question is clear. So this question has in fact considered all the formulas of capacitor. Capacitor के सारे formulas को इसने cover कर लिया, you know. It took the formula C is equal to K epsilon naught A by D. Then it took the series का formula. Then it took your understanding of charge. फिर आपको हर एक का potential difference भी निकालना था और फिर energy भी निकालना था. So ये एक 3 marks का question था. This is a 3 marks numerical. Is it completed? Any formula that you have not been able to, you understood all the formulas here? You want to see the question ka page? Okay. Only if it is given, Janisha, you will consider K. Otherwise, it is normally as 1, right? Here we have considered ना बेटा K को consider किया है कि पहले केस में अपना C1 जो था वो K1 है और फिर सेकेंड केस में उसने बोला था कि Y का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो मैंने कंसिडर किया है इसलिए तो हमें मिला C2 और इज इक्वल टू 2C1. कंसिडर होता है अगर दिया है तो हम कंसिडर करेंगे नहीं तो एयर या वैक्यूम मीडियम रखेंगे. नो 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 वो यहाँ यूज नहीं हो रहा है मृणाली. कैपेसिटर्स में हम यूज नहीं कर रहे हैं. कैपेसिटर के सारे फॉर्मूलाज उसी से तो डिराइव हो क्या है. व्हाट यू आर टेलिंग मी ना V इज इक्वल टू वो जो आप बोल रहे हो उससे तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है. वर्क डन यहाँ नहीं आ रहा है ना. वर्क डन दिया ही नहीं है डेटा में. अगर होता तो हम यूज करते उसको. ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते. डेटा के हिसाब से ही जाएंगे और डेटा इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी डायरेक्टली. Completed. Can I move forward? Okay, so next question in front of you is this one. Find the amount of work done in rotating an electric dipole of dipole moment. Dipole moment का symbol क्या था? What is dipole moment का symbol? Dipole moment हम किससे लिखते हैं? Yes, P से लिखते हैं. So P is 3.2 into 10 to the power -8 कूलम मीटर दिया है. Right? In a position, from its position of stable equilibrium. कौन मुझे बताएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना कंसिडर करने का होता है. What is the angle under stable equilibrium? Under stable equilibrium, the angle to be considered is 0. So इसको मैं θ1 बोल रही हूँ बिकॉज वो बोल रहा है कि एक पोजिशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0
to the position of unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पूरा एंटी पैरेलल हो गया. इसका मतलब है θ2 is 180 डिग्री. आई होप दिस इज क्लियर. अब और इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को दिया है. दिस इज 10⁴ न्यूटन पर कूलम. And we have to find out what is the work done. Do you know the formula? All of you, do you know the formula? Yeah, yes, Aryan, correct. So work done जो formula है जो हमें use करना है, it is PE cos θ1 minus cos θ2. ये हमारा formula है work done का. So what is our solution going to be? Yes, please substitute everybody and get me the answer. Please substitute and get me the answer. Yes, correct. Okay, Pankaj, Rushi, Praveen, Aryan, Mrinali, Vaishnavi, Ishan, Sejal, Neeraj. दो नीरज हैं यहाँ. So into 2 into 10 raised to -4. ये आपका फाइनल आंसर होगा. So this is as per the formula only, Aryan. First you take the initial position and then you take the next position. Yeah. Anti-parallel. Anti-parallel, the dipole is the same thing we use in magnetism. We call it as MB cos theta. So MB cos theta 1 minus cos theta 2 magnetism में भी use करते हैं मृणाली. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा जो डाइपोल होता है, डाइपोल का डायरेक्शन एक्चुअली कैसा होता है कि डाइपोल इज ऑलवेज सपोज टू बी ड्रॉन माइनस
on the left side and plus on the right side. This is the standard position. So when we say unstable equilibrium, it is not, it is exactly in the reverse. So that is unstable equilibrium. जब 180 degree उसका angle change होता है. So in this position, it is 0 degree. So I've just drawn a non-polar molecule. That is the meaning of that. So same thing in magnetism. South हमेशा left side पे draw करते हैं और नॉर्थ हमेशा राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. यस यस एब्सोल्युटली. मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है, एंटी पैरेलल टू दिस पोजिशन. Have you all completed? Moving on to the next question. So this question is that there are 3 point charges plus Q, plus 2Q and capital Q, which are on the 3 vertices of a triangle, of an equilateral triangle. So all sides are same. I'm going to call the sides as R. I'm just going to draw the diagram first. And this is A, this is B, and this is C. This is based on electric potential energy. And on A, we have plus Q. On B, let's say we have plus 2Q. And let's say on C, we have capital Q. So I can say I've just made an assumption R. So let R be the sides of the equilateral triangle. Right? So what is the first potential energy, UAB? UAB is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1, Q2 लेना है. तो पहले say for example I'm taking for AB, it will become Q into 2Q. Potential energy का formula लगा रहे, Q1, Q2 upon R distance. Similarly, UBC, B और C के बीच के charges देखेंगे आप. So 1 upon 4 pi epsilon naught 2Q into Q upon R. Similarly, we have the third potential energy between A and C, which is 1 upon 4 pi epsilon naught Q into capital Q upon R. अब मुझे बताओ कि उन्होंने क्या दिया है. What condition is given? The condition is on the last line. What does the last line say? The last line says so that the potential energy of this entire system is going to be 0. इसका ये मतलब हुआ कि you have to say that since the electric, yes, very good children. Since the electric potential energy, so Sejal is answered, Ishan is answered, Palak is answered. Electric potential of the system is 0. इसका मतलब है UAB plus UBC plus UAC is equal to 0. Can you try this? Then I'll give you the solution. ये condition आप लगा सकते हैं and you can get the answer. Okay, very good, Aryan. Please
substitute equal to 0 and see whether you're getting the answer. Otherwise I will solve it. Please try this. Please write it down. Yes, Dhruvin. So they are basically preparing you for it. Yeah. Please check whether you're getting that answer, because everything gets cancelled and then see what is left with you. Everyone will get it. Solve kar lo. आ रहा है क्या? सबको आया? सिंपल है, अगर आप डाल देंगे तो आ जाएगा. सो आई एम जस्ट जिसको जो सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आर सिंपल बट डेटा बराबर से देखना है. स्टार्टिंग ट्रबल होता है कभी कभी, मतलब अपने को क्वेश्चन समझता है, सब आता है अपने को, बट हम स्टार्ट नहीं कर पाते. तो अगर आप स्टार्टिंग बराबर से करेंगे तो फिर इट्स समटाइम्स लाइक इंटीग्रेशन, यू नो. क्वेश्चन देखा है, किया है, बट स्टार्टिंग ट्रबल हो जाती है हमको, है कि नहीं? शुरू हो गए तो बस शुरू हो गए भाई, फिर तो कोई रुका नहीं सकता, ऐसा हो जाता है. 2qq plus qq is equal to 0. So ये 3qq is equal to minus 2q square, and therefore your capital Q is minus 2q upon 3. वही फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए. फिर तो क्या है, फिर तो आप नाचते हो, मतलब आपको आता ही है. स्टार्टिंग ट्रबल नहीं होना चाहिए. जैसे क्वेश्चन पढ़ा, देन थिंक ऑफ द फॉर्मूला, काम डाउन, ट्राई टू थिंक ऑफ द फॉर्मूला, क्या सीखा था हमने, और फिर आप करें. So this was 3 marks question. This is a 3 marks question. Completed guys. एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल था. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ हमने कंप्लीट किया है सारे न्यूमेरिकल्स.
ये सबका कंप्लीट हुआ है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? तो हमने काफी क्वेश्चंस जो टाइप्स देखे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ देखेंगे, सो दे हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम, इजंट इट? यहाँ पे उन लोगों ने फॉर्मूला ले लिया है, फिर यू नो yes, I thought we'll finish the big chapters first and then go to the smaller chapters. So कल के इसमें हम लोग MEC और मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर देते हैं, क्या बोल रहे हो? चलेगा? या हम इलेक्ट्रॉन फोटोन AMN भी कर सकते हैं, whichever you are comfortable with. अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स AMN कंप्लीट कर देते हैं, बिकॉज AMN बड़ा चैप्टर है. एंड देन MEC और मैग्नेटिज्म का रिविजन. MEC यस, मैं फॉर्मूलाज पहले बताना पड़ेगा ना अपने को. यस, तो पहले फॉर्मूलाज की एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर करेंगे. या थोड़ा सा करेंगे प्रिया, आज मैं स्टार्ट कर दूंगी उसको. या ओके, मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कर दूंगी. यस, सो हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कवर हुआ आज, पोटेंशियल का फॉर्मूला कवर हुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें काफी फॉर्मूलाज कवर हो गए. मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जस्ट स्कैन कर रही हूँ बिकॉज आई विल नॉट रिविजिट दिस अगेन, राइट? एंड फिर हमने वो पोटेंशियल एनर्जी वाला भी देख लिया. ये लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर. कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इट इज? कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इट इज? A molecule with a dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated to be anti-parallel to the field, then find the work done by the external agent. Find the work done by the external agent. क्या लग रहा है? Yes, the same formula. Very good. So it is rotated anti-parallel. मतलब पहले वो equilibrium में था. It's again the same formula. Work done का formula क्या है? It is PE cos theta 1 minus cos theta 2. Very good. So this is nothing but PE 1 cos of 0 minus of minus 1. So again here the answer is 2 PE. लास्ट टाइम उन्होंने अपने को वैल्यूज दिया था, उतना ही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में. ये शॉर्ट आंसर्स में है ये क्वेश्चन. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So now I'm going to revise the formulas for which chapter should I start? MEC or AMN? Okay, so I have majority telling me MEC first. So we'll do MEC first and then we'll do AMN. Okay. I had removed AMN, but I'll do MEC first and then I will do AMN. So let's start with MEC ka formulas and what we need to know. MEEC करने वाले हैं कल के लेक्चर में. So MEEC के फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं फटाफट. I hope everyone has written this down. Yeah, one at a time आर्यन. सब लोग डिमांड करेंगे तो कैसे चलेगा ना?
हर एक तो सब तो एग्जाम लेना ही है ना, मतलब ये चैप्टर तो है ही. Can I start? Yeah. So when we are talking about magnetic effect of electric current, if we have any conductor of, we can start off with F is equal to I L bar cross B bar. This is the formula to be used when there is a conductor of length L which is placed in a uniform magnetic field. So if we have any length L and it is placed in a uniform magnetic field, then we use this formula. And if this rod is carrying some current I in the presence of magnetic field, it will experience a force. The next formula is the Ampere's circuital law, which is closed integral of B bar dot dl bar is equal to mu naught of I. It is analogous to which other theorem? Anybody? It is analogous to which other theorem? Anybody who can tell me it is analogous to which other theorem? Yes, very good. It is analogous to Gauss's theorem in electrostatics. It is analogous to Gauss's theorem in electrostatics. So ये भूलना नहीं है. Formula number 3. If you know, the magnetic force is actually of two types. When you're talking about the magnetic force, it is of two types. Out of that, what is the general formula for force? What is the general formula for force if it is acting on a particle? If it is acting on a particle, then it is Q V bar cross B bar. This is for the first formula is the force acting on a rod. And this is if it is acting on a moving charge. So ये कब use होता है? For moving charges. You have to use this formula for moving charges. Next, for a solenoid. Solenoid में, what is the magnetic field formula? Magnetic field formula for solenoid is mu naught Ni, where mu naught, this is N upon L times of I. This is your B. Yes, correct. So this is one of the applications of your Biot-Savart's law. Sorry, applications of Ampere's law. For a toroid, what is the formula? B is equal to mu naught Ni hai formula. But for a toroid, if you remember, it is N upon 2 pi R. Because you remember the toroidal structure, it has outer radius, it has inner radius. So here you have to take number of turns upon 2 pi R. So that is for a toroid. First is for rod carrying a current. And third is for moving charges. Shruti.
पहला वाला जो है वो जब एक रॉड रहता है उसमें करंट कैरी कर रहे हैं, सो कंडक्टर ऑफ लेंथ एल which is carrying a current I and it is placed in a uniform magnetic field, then we have to use the first formula. Yeah, correct. For any straight conductor, if there is a straight conductor, infinitely long straight conductor, and it is carrying a current I, and we have a point P जहां पर हमें magnetic field ढूंढना है, then the magnetic field formula in that case is mu naught upon 4 pi 2I upon this distance, ये r distance होता है 2I upon r, or we simply say it is B is equal to mu naught I upon 2 pi r, mu naught I upon 2 pi r. Is it clear? Can I proceed to the 7th formula? Okay. So the 7th formula is based on what is the magnetic field of a circular coil. So if it is a circular coil carrying a current I as per the right hand rule, Janisha, the 6th formula is whenever there is an infinite straight conductor and there is a current flowing in that wire or that straight conductor, then what is the magnetic field around it? Because if you remember, there is magnetic field around. कोई भी straight conductor रहता है तो उसके चारों तरफ क्या रहता है? Magnetic field ऐसे रहता है. So we are finding out a magnetic field. So this is for straight conductor. You can write it as infinite straight conductor. 3 applications है Gauss's law. Sorry, Ampere's law. Ampere's law this is, right? So Ampere's circuital law कहते हैं इसको. Ampere's circuital law के 3 applications थे. एक है solenoid, second है toroid और third है straight conductor. Is it clear, Janisha? Janisha Suvarna. Is it clear? Can I proceed? Okay. So अगर ये आपका magnetic field हमें ढूंढना है center पे, the formula was, yes, very good Ishan, B is equal to, what is it, mu naught upon 4 pi, what should I write? It is 2 pi Ni upon R. ये उसका general formula है. N is the number of turns of the coil. तो इसको हम लोगों ने आपको सिखाया रहेगा is mu naught, what you normally write, N we consider it as 1, ये pi आप cancel कर सकते हैं, so we always write mu naught I upon 2R. So actual formula भी आपको पता रहना चाहिए, because if number of turns are given, you know, that time you should know. So it is mu naught I upon 2R. If it is, we have to find the magnetic field at the center of the circular coil. If you have to find the magnetic field along the axis, अगर एक coil है and ये हमारा center O है और हमें at a distance ढूंढना है along that axis, say P point यहाँ है और R distance पे ढूंढना है. So this is the magnetic field at the point P, which is along the axis. तो ये जो करंट लूप है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इतने डिस्टेंस पे कितना होगा, मतलब द पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. सो उसका क्या फॉर्मूला था? द फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. सो ये वाला क्या है? सेंटर वाला फॉर्मूला है. एंड ये वाला कौन सा वाला है? एक्सिस वाला फॉर्मूला है. 2 पाई Ni R square upon R square plus X square raised to 3/2.
So यहाँ पे R और X confuse मत होना. I can draw it over here like this. This is basically the circular coil. और point P यहाँ पर है और ये distance अपना X है. The radius of the circular coil is R. और जो distance आप point ले रहे हैं वो X distance है. और ये जो circular coil का radius होता है वो आपका R है. So here we can always cancel and write also. So this is mu naught Ni R square upon 2 times of R square plus X square raised to 3 by 2. So this is a important formula. This is to find the magnetic field along the axial line. This is on page 243 of the textbook. उसका derivation है. So what is the first one? First one is the magnetic field produced by a full circle. And what is the second one? It is along the axis. Anybody knows कि अगर circle नहीं दिया, arc दे दिया. I have given this formula in class. अगर हमने circle नहीं लिया, arc ले लिया, then remember the general formula. It is mu naught upon 4 pi Ni theta upon R. ये आपका मेन फॉर्मूला है. किसके लिए बता रही हूं? ये अगर पूरा सर्कल नहीं दिया, से फॉर एग्जाम्पल आई से एग्जाम्पल सेमी सर्कल पूछा, सेमी सर्कल पूछा तो इसका जो थीटा है वो पाई हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं, सेंटर वाला फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या आपको 2 पाई दिख रहा है? 2 पाई दिख रहा है. ये 2 पाई क्या है? 2 पाई इज द एंगल. ये जो पूरा एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो 2 पाई है. अगर मैंने सेमी सर्कल लिया तो कितना एंगल है यहाँ पे? कैन आई से द एंगल इज पाई? देन द फॉर्मूला फॉर दिस, यहाँ पर जो सेंटर रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Ni पाई अपॉन R. आप समझ रहे हैं? आप अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं. तो आर्क कैसा भी हो, यू नो, आर्क कैसा भी हो, पाई बाई 3 हो, पाई बाई 6 हो, पाई हो, 2 पाई हो, तो आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Ni थीटा अपॉन R. याद रहेगा? Yes or no? Please take it down. This is a very important slide. Why I'm telling you to take it down, in case like I lose the slide or I lose the PowerPoint, because sometimes I forget to say, you know, save. So agar, if I lose it, at least you have it. That's why I'm giving you that 1 minute, or you can take a screenshot of it so that, you know, you'll always have the PDF with you. So you can keep the screenshot of the important slide. So it is always there on your phone or your laptop, and that will really help. एंगल, एंगल प्रिया, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री ना बेटा. 360 क्या होता है? 2 पाई होता है ना. पाई इज 180 ना. वो कोई भी, like, you know, see, they can give you any arc, right? So even if they give you some arc like this, you know, ऐसा कुछ arc दे दिया और आपने, और यहाँ पे उन्होंने बोला पाई बाई 3 है और पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो, तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं. थीटा के जगह पे आप पाई बाई 3 डाल दो बस. दैट इज द ट्रिक. तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया. Is it all? You're welcome. Yeah. Eighth is done. Can I move to the 9th one? Probably I can finish the 9th one before we leave so that we can, yeah. So the 9th formula is, there are 2 wires, you know, 2 parallel wires, infinitely long. Let's call it as C1 and C2, meaning conductor 1 and conductor 2.
separated by some distance d. They contain currents. It is I1 and I2. Right? Now, these will experience a force of attraction or force of repulsion. If the currents are in the same direction, there will be force of attraction. If the current are in the same direction, there will be force of attraction. And if the currents are in the opposite direction, there will be force of repulsion. I hope you remember this. यहाँ हम right hand rule भी लगाते हैं और screw rule भी लगाते हैं, right? So यहाँ पर I mean to say left hand rule भी लगाते हैं और screw rule भी लगाते हैं. So what is force per unit length on each conductor? It is mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon x. X या D. I have taken it as D here, so I am taking this as D here. This is in Newton per meter. So you should always see what data is given. If they are just asking you the force, then it should be mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon D times of L. So this is just in Newton, and otherwise it is Newton per meter. Got it? So this is the force when there are two wires of infinite length which are separated by a distance of D, carrying currents I1 and I2. The currents can be different. So they both experience a force of attraction or a force of repulsion. If the current are going in the same direction, we are considering same length. Dhruvin, we are considering same length. कि जो जितना हम कंडक्टर 1 का लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वही कंडक्टर 2 का है. So the force per unit length is for each conductor. So force of attraction हो सकता है, नहीं तो force of repulsion हो सकता है. अगर currents are moving in the same direction, then there is force of attraction, and if they are moving in the opposite direction, there will be force of repulsion. So this is the way you will remember it. And I think I had shown you how to remember it in class. आपको हाथ से दिखाया था कैसे आपको याद रखना है. So this is an important formula. टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते ही हैं. व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला? आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर ओनली. टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क इज mb sin थीटा इफ इट इज अ मैग्नेट. राइट? अगर एक मैग्नेटिक टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो इट इज mb sin थीटा. नहीं तो टॉर्क इज इक्वल टू b ना sin थीटा फॉर अ कॉइल. यस, अगर कॉइल है तो बिना साइन थीटा टॉर्क के लिए यूज करना है. अगर मैंने बोला कि ये कॉइल इज रोटेटिंग, यू नो, कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वी विल यूज BINA साइन थीटा, बिना साइन थीटा. बिल साइन थीटा ईशान इज फॉर फोर्स. बीना साइन थीटा इज फॉर कॉइल. बस कॉइल का एरिया कंसिडर होगा. और वो जो पहला फॉर्मूला मैंने दिया था वो बिल साइन थीटा. द फर्स्ट फॉर्मूला इज बिल साइन थीटा. सो ये वाला फॉर्मूला इज बिल साइन थीटा. दिस इज बिल साइन थीटा. BIL साइन थीटा इसमें आएगा. सो आई थिंक बेसिकली अभी सिर्फ साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूलाज बाकी है. बाकी सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए.
सो कल साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला कवर करते हुए फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ जा सकते हैं. Is that okay? Yeah, I know it is cancelled, reduced है and cancelled है. अगर आप चाहते हो तो I'll not take. It's okay. I know cyclotron is deleted. You don't want me to cover it? Okay, we don't cover it. HSC के लिए तो cancelled है. नहीं है ही नहीं. reduce में नहीं है. Done, guys? Yeah, so we have a few more formulas to cover. Yeah, helical तो वही है ना, QVB sin theta. Yeah, it is the same formula, BV sin theta basically. Yeah, let us see what kind of questions are related to it. VB sin theta होता है basically, वो cancel हो जाता है helix में, path of the helix. Yeah. ठीक है. Okay then, so I am winding up today. We meet tomorrow at 12 o'clock. I think I have the lecture. We will finish with MEEC tomorrow, and let's see how many of you all can apply the formulas. So have a great evening, guys. Stay safe, everybody, and take care of yourself. Don't go out much because you have an exam coming. Thank you. Bye-bye. Jai Hind.